नमत व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ना हो मुमताज़ इस्लाम दुनिया भर के दिनों में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान पाक सीनों में। टुडे माई लेक्चर आई डिस्क्राइब यू ड्यू लाइक टू माई चैनल लीगल टॉक नेटवर्क बाय इश्तियाक चौधरी। कुरान पाक हमारी रहनुमाई करता है। दी कुरान पाक इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ द ह्यूमन लाइफ। सूरत आल इमरान में है, अल्लाह पाक फरमाता है अल्लज़ीना अस्तजबु व रसूलिही मिन बादिही मा असाबल कुर्ब अल्लज़ी अहसन मिनहुम वत्तकुल्लाह अजरुन अज़ीम। 172 है आयत नंबर सूरत आल इमरान में। अल्लाह फरमा रहा है ऑफ दोज़ हू responded to call of Allah and the messengers, and after receiving the good, those who do good and act righteously have great reward. الذين قال لهم الناس إن الناس قال جمع لكم فاخشوه لزادهم إيمانكم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل वत्तकुल्लाह बिनिअमति मिनल्लाह व फज़लिल यमससु सूअ वत्तकुल्लाह रिज़वानुल्लाह वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। इन्नमा ज़ालिकुम शैतान युख़व्विफ़ु औलिया फला तुख़ाफ़ूहुम व ख़ातूनी इन कुंतुम मुअमिनीन। This my lectures for our Muslims ummah, for our British lawyers, students, general publics, law enforcement agencies, and our my viewers in abroad. This message of Allah. Those whom man said, surely the people have gathered against you, so affright them. But this increased their faith, and they said, Allah is sufficient for us, and He is an excellent protector. This Quran said. 174. So they return with grace, bounty from Allah. No harm touched them, and they follow the pleasure of Allah. And Allah is the Lord of mighty grace. Beshak. It is Satan who frights you of the friends, but fear them not, and fear me if you are believers. ولا تحزنوا الذين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لم يزروا شيئا يريدهم الله لا يجعل لهم خطأ لا يخير ولهم عذاب أليم. إن الذين اشتروا بالكفر بالإيمان لن يضروا والله عذاب أليم. Allah says in Quran Pak, the Quran Pak is a fundamental law in human being, and let us those give you who hasten towards eventually, surely they can do harm to Allah. Allah desires not to give them any position, is the head after, and for them is a severe punishment. 177. Those who purchase unbelief at the cost of faith can do harm to Allah, and for them is a painful punishment. 170 and section says Quran Pak, and let not those who disbelieve think that our grant thing them respite is a good for them. We grant them respite only they may increase in and sit, and for them is a humility punishment. 171 section in Quran Pak, Surat Al Imran says, Allah will not leave them believers as said in which you are until He separates the evil from the good. Nor is Allah to inquire you with thee
a sin, but Allah choice His messengers whom He places. So believe in Allah, His messengers. So believe in Allah and His messengers. If you believe rightly, you will have a great reward. Allah says in Quran Pak, the message, ये मेरा मैसेज ब्रिटिश के लिए भी है, जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए भी मेरा मैसेज है कि अल्लाह का पैगाम सुने। कुरान पाक क्या कह रहा है, अल्लाह का पैगाम है। और मेरा दिस इज़ माई लेक्चर इन इस्लामिक वे, इस्लामिक लॉ, दे आर डिस्क्राइब इस्लामिक लॉ इन वे इन कुरान पाक, द फंडामेंटल लॉ इन लाइफ इन ह्यूमन बीइंग। दे 180 section in Al Imran, and let not those who and negligently in spending what which Allah has given them, but His grace, think that it is good for them, nay, it is bad for them. They shall have a color of which they covetously behold round their necks on day of resuscitations, and Allah to belongs to heritage to heavens and the earth, and Allah is aware what you do. नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे। अब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।